Good morning, dear students. I welcome you to the session on strategic management. If you remember, in the last lecture, we tried to cover what is called as generic strategies. आपण मागच्या लेक्चरला generic strategies cover केल्या आणि त्या चार टाइप्सच्या generic strategies समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. What are those four different types of generic strategies? If you remember, we started with understanding the first leadership strategy, which is called as cost leadership. Then we tried to understand what is called as differentiation. The third strategy we moved forward and tried to understand is called as focused leadership, and the last strategy we looked into is called as focused differentiation strategy. If you remember, I told you in the last lecture why those strategies are called as differentiation, those strategies are called as generic strategies. Dear students, these strategies are called as generic strategies because their competitive advantage is either created on cost leadership or differentiation. So we concluded that generic strategies are majorly classified into three, that is differentiation, cost leadership, focused differentiation, and focused cost leadership. Today, we move a step forward and we would be trying to understand a concept or a strategy which is called as grand strategies. Let us move forward and try to understand what are these grand strategies and what are the different types of strategies which would get incorporated in understanding the grand strategies. Let us move a step forward. Grand strategies are also called as मास्टर और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी. कुछ बुक्स में आपको ग्रैंड स्ट्रेटेजी को ही कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कहा जाता है और कुछ बुक्स में उसी को ही मास्टर स्ट्रेटेजी कहा जाता है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन generic level strategy and a corporate level strategy. Generic level strategies are created by creating a competitive advantage which can be either cost leadership or can be differentiation. Let us try to understand today what are the different types of corporate strategy. If you look at what do you mean by a corporate strategy, जैसे जेनरिक स्ट्रेटेजी को हमने कहा गया जो स्ट्रेटेजीज जेनरिक लेवल पे बनी जाती है और जहां पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन के बेस्ड होता है उसको हम जेनरिक स्ट्रेटेजी कहते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट और अ मास्टर लेवल स्ट्रेटेजी? These are strategies which are going to give directions to the organizations for overall achievement of its long-term objectives. And these strategies are usually planned at top level. Hence, these strategies are called as corporate level strategies or master level strategies. Name it several master strategies which are planned at top level. What is the purpose of planning the strategies? So that it gives direction to the organization towards achievement of overall long-term objective or achievement of its strategic intent, that is vision, mission, objective of an organization is called as corporate level strategy. ये strategies हमें हमारे organization का vision और मिशन अचीव करने के लिए मदद करने वाले हैं, इसीलिए इन strategies को corporate level strategy कहा गया है. Let us move forward and try to understand now what are the different types of strategies available. In grand strategies, there are three types of strategies which we are going to discuss. The first, which is called as stability strategy, the second, which is called as growth strategy, and the third, which is called as retrenchment strategy. These strategies are further classified into different subcategories of strategy, but broadly the grand strategy is classified into stability strategy, growth strategy, and retrenchment strategy. Let us move a step forward and try to understand the first point. What is stability strategy? Look at the first word, stable. The word stability, which is stability, which is from the word stable. Let us try to understand what is this stability strategy. Dear students, stability strategy is a strategy wherein firm attempts to maintain its status quo without existing levels of effort. इसका मतलब ये हुआ, जैसे स्टेबल नाम है, स्टेबिलिटी नाम है,
ये स्ट्रेटेजी कंपनी यूज करती है। कब यूज करेगी? जब उनको कुछ भी नहीं करना है, जो पहले स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं वैसे ही रखनी है और एडिशनल एफर्ट्स उस स्ट्रेटेजी पे भी नहीं लगाने हैं। So you are having status you maintain and you are not going to involve any efforts on the strategy which you are implementing or on the things which you are doing at the present in the organization. When this is done generally, stability strategy कब की जाती है? हम अगर स्टेयर्स चढ़ के आते हैं या भागते हैं, भागने के बाद या दौड़ चढ़ने के बाद हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में such strategy is applicable only when it has got an incremental growth or there is an improvement by margining changing the business. म्हणजेच काय, पहिल्या स्टेजला if I am going to, I have done some campaign and I have got a growth in my business. After you got a growth, we should try to observe what, when, why, how regarding the strategy we have adopted. So what I'm going to do is, after I get an incremental growth, I will not put any efforts but to try to observe, try to supervise, try to interpret what is the impact of the strategy which I have implemented. Second case in which stability strategy would be implemented is when there is improvement in the business, when there is an improvement by marginally changing the business. For example, I was having only one product line. I started creating one more product line, that is P2. When that product line was created and I had put into efforts for suppose 6 months, for 2 months, after 6 months, I'm trying to get an interpretation or observation of what my business is doing. And when I'm going to observe and look into how I am performing, I am not going to do anything. I am not going to put any efforts. Such types of strategy is called as stability strategy. So सबसे बड़ा क्वेश्चन कब आता है कि हमें स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज कब करनी पड़ती? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, द वर्ड इटसेल्फ सेज you remain as it is, you do not put more efforts. Whatever efforts you have already put into, you are trying to observe what is an outcome of that efforts. That is what you are going to do in stability strategy. म्हणजेच मग stability strategy कधी वापरायची? Let us try to look at certain condition. First condition when the stability strategy is to be used, one, when the industry or an economy is in turmoil. It's not doing very good. You can't predict what is going to happen. It is not clear what is the industry going to do in future, or what is going to happen with the economy. Economy is not in good condition. Industry or sector is not performing well, is in turmoil. When that, in that case, when we are going to use a stability strategy. The second condition in which I should go for a stability strategy is when environment is volatile. You cannot predict. क्या होने वाला ये आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। इससे अच्छा बिना स्ट्रेटेजी डाले हुए जो एफर्ट्स पहले आपने डाले हुए वही रहने दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि होता क्या है आगे जाके। दैट इज व्हाट यू कैन डू व्हेन environment is volatile. So point number one, when economy or industry is in turmoil, we need to go for stability strategy. When environment is volatile, then also we need to opt for a stability strategy. What does it means? Means stability strategy is applicable when the conditions are uncertain. Uncertain conditions, you're not knowing what is going to happen. And मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हम कुछ स्टेप्स वॉक करके ऊपर आते हैं, हम जैसे ही थकते हैं हमारा वॉकिंग का पेस कम हो जाता है या हम खड़े हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पुट इनटू एन एनर्जी, यू हैव एग्जॉस्टेड, यू आर टायर्ड नाउ, यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम बिफोर यू स्टार्ट वॉकिंग अगेन. ये जो रुकना है, जब हम रुकते हैं स्टेयर्स चढ़ने के बाद या भागने के बाद वी रन अ वाइल एंड देन वी स्टॉप फॉर अ वाइल, टेक रेस्ट, rejuvenate, try to regain the energy we have lost. After that we try to walk into. ऐसा ही कंपनी करती है. क्या करेगी कंपनी कि कुछ भी लंबी स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है ना, उसके रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते हैं. मुझे उस रिजल्ट्स का आउटपुट देखना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेंटेन माय स्टेटस क्यू. मी तिथेच उभा आहे, मी एकही स्टेप पुढे घेतली नाही.
का? I would like to see whatever distance I have traveled, whatever time I have took, and moreover I have exhausted. I need to regenerate before I take any action further. In that all cases, we are going to opt for a stability strategy. In short, just a recap of the point what I've tried to put into, stability strategy use कधी केली जाते? One, when the industry or economy is in turmoil. Point number two, when environment is volatile, when conditions are uncertain, and fourth condition is when you have finished a period of rapid growth. That is the case when we are going to use the stability strategy. I suppose everybody is clear with respect to what is stability. Stability strategy. Stability means maintaining status quo without putting any efforts. Why without putting any efforts? Because you have already put into efforts. तुमचे ऑलरेडी एफर्ट्स तुम्ही पुट केलेले आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला आता एफर्ट पुट करायची गरज नाही. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड विथ रिस्पेक्ट टू such types of strategy which we need to understand. Am I with you? So, आणि कधी वापरते ही स्ट्रॅटेजी? ज्या ऑर्गनायझेशनला असं वाटतंय की एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट हा टोटल टर्मोइल मध्ये आहे, एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट वोलटाईल आहे, इंडस्ट्रीच्या बाबतीत तुम्ही प्रिडिक्शन करू शकत नाही, कंडिशन्स आर व्हेरी अनसर्टन, or there is a clause or a condition when an organization has done certain activity or implemented a strategy, they wanted to find out what are the results of those strategy. In that case, company will generally opt for a stability strategy. So let us try to move forward. मग ह्या स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटेजी मध्ये काय प्रकार आहेत का? So the next question is answered by the points which are mentioned on the slide. Yes, stability strategy has different approaches. There are 4 different approaches in stability strategy. I told you we should remember that way. What are the corporate level master strategies or grand strategies? There are 3 types of grand strategies or corporate level strategies. What are those? First is stability. Second is growth strategy. Third is retrenchment strategy. We were looking into what is stability strategy. I repeat, stability strategy ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पे कंपनी उस वक्त कुछ दिनों के लिए जो स्ट्रेटेजी पहले इंप्लीमेंट की है वो ही इंप्लीमेंट करती है और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स इनकॉर्पोरेट नहीं करती. वो क्यों नहीं करती? क्योंकि उस वक्त इकोनॉमी, इंडस्ट्री अनसर्टन है ना, एनवायरमेंट इज वेरी वॉलेटाइल, जो आपके कंट्रोल के बाहर है. आप उस एक्सटर्नल एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस एनवायरमेंट में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा. एज यू आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट, you adopt a strategy which is called as stability strategy, which is by means putting ourselves in the position where we are and we are not going to put any efforts. So these strategies are called as stability strategies. Now the question arises, are there different types of stability strategies available? Yes, there are 4 different types of stability strategies available, called as holding strategy, stable growth strategy, harvesting strategy, and profit endgame strategy. Let us try to understand one by one what are these different types of strategies available. The first strategy is called as holding strategy. Let us look at the point, what is holding strategy. Let us look at a situation number 1. There is a company which has gone through सर्टन बॅड फेस, ज्याला आपण टर्ब्युलन्स म्हणतो. म्हणजे एखादी घटना जी ऑर्गनायझेशन मध्ये इंटरनली घडलेली असावी किंवा एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट मध्ये जो टर्ब्युलन्स आलेला होता, त्या टर्ब्युलन्सनी माझ्या ऑर्गनायझेशनवर निगेटिव्ह इम्पॅक्ट केला, निगेटिव्ह इम्पॅक्ट केला किंवा काहीतरी असा इम्पॅक्ट केला जो ऑर्गनायझेशनने एक्सपेक्ट केलेला नव्हता. अशा केसमध्ये ह्या ऑर्गनायझेशन ज्यांच्यावर त्या टर्ब्युलन्सनी त्यांच्या ग्रोथवर इफेक्ट झालेला आहे, अशा कंपनीज तो इव्हेंट झाल्यानंतर रेस्ट करायचा प्रयत्न करतात.
किंवा झालेला इव्हेंट डायजेस्ट करायचा प्रयत्न करतात किंवा झालेला इम्पॅक्ट कन्सॉलिडेट करायचा प्रयत्न करतात. Such situation, company would try to adopt a strategy which is called as holding strategy. Let me put that into a very simple example. Everybody is aware that Air India is now taken off by the Tata's group, and everybody is knowing what was the situation of Air India previously. Air India was not performing well. Their balance sheets were not at all good, है ना. तो उनका कैपिटल ढंग से नहीं था, उनको प्रॉब्लम कंटिन्यूस आते रहते, सैलरीज एम्प्लॉइज के टाइम पे नहीं हो रहे थे. पर जब टाटा ने उसको ले लिया, टाटा ने इमीडिएटली लेके उसको ऑपरेशन करना शुरू नहीं कर दिया. ओके, वी हैव टेकन, but we will try to understand the entire existing system. We will try to see that what is to be incorporated so that Air India comes out with the profitable model to the organization. So the time which the company has taken after taking over Air India is the time where the company is trying to analyze, observe, try to go through the facts so that it can be converted into an advantageous model is called as an holding strategy, है ना. या फिर एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस शुरू किया, he was doing very well for 6 months 7 months, the business was running very good. अचानक उसको इस साल के शुरुआत में in the month of January itself, first week his sales started declining, है ना. सेल्स डिक्लाइन करने लग गए तो वो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन फॉर डिक्लाइन इन द सेल्स. इज इट the factors or forces in the internal environment that has brought down the sale, or is it those factors which are available in external environment which are creating the fall in sales. वो एनालाइज करने की कोशिश करता है. और डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए जितना टाइम लेता है उस दौरान वो एक भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं करता है. उन स्टेजेस को हम कहते हैं कि ही इज ट्राइंग टू टेक रेस्ट, ही इज ट्राइंग टू डाइजेस्ट द रीजंस और नो द रीजंस फॉर विच द डिक्लाइन इन सेल्स हैव स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, और एल्स ही वुड लाइक टू कंसोलिडेट. अपने आप में एनर्जी डालेंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी बैठ के बनाएंगे टीम के साथ, फिर वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे. इंप्लीमेंट करने के पहले का जो फेज होता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं करती है उसे हम होल्डिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं. दैट इज व्हाट इज सिचुएशन 1. Once that period is completed, company will try to implement the strategy which is planned. जैसे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हुई है उसको वो और वो स्ट्रेटेजी को वो मार्केट में लेके आती है. पर स्ट्रेटेजी लाने से पहले जो टाइम होता है जहां पे वो रेस्ट करता है, जहां पे वो डाइजेस्ट करते हैं, जहां पे उसको कंसोलिडेशन मोड पे डाला जाता है, उस स्ट्रेटेजी को हम होल्डिंग स्ट्रेटेजी कहेंगे. एंड दैट इज सिचुएशन नंबर 1 wherein we can opt for a holding strategy. Now let us try to understand the strategy number 2. What is this strategy number 2? This is a strategy which the company would adopt. ही होल्डिंग स्ट्रेटेजी कंपनी कब यूज करेगा, सिचुएशन नंबर 2 में जो एनवायरमेंट है वो इतना हॉस्टाइल है, इतना अनसर्टन है, आपको उसमें रहना है, पर आपको जब तक वो अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती, जब तक उस एनवायरमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आती, आपको आपकी तरफ से कुछ भी नहीं करना है. पर आप उससे बाहर नहीं आ सकते क्योंकि आप उसमें अच्छा बिजनेस कर रहे हो. इसलिए इन दैट केस यू आर गोइंग टू अडॉप्ट अ होल्डिंग स्ट्रेटेजी. लेट अस पुट दैट आल्सो इन अ सिंपल एग्जांपल. नाउ इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग पैंडेमिक, जब लॉकडाउन हुआ, सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला सेक्टर था सर्विस सेक्टर. आई विल नाउ कनेक्ट इट टू एन एयरलाइन इंडस्ट्री. जब गवर्नमेंट ने फ्लाइट्स बंद कर दिए तब सबसे बड़ा इंपैक्ट एविएशन सेक्टर को हुआ. जब गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा ओपन अप करने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 50% ऑक्यूपेंसी पे आपको जाना पड़ेगा, मतलब 2 सीट के बीच 1 सीट आपको खाली छोड़नी पड़ेगी. जैसे एक सीट आप खाली छोड़ते हो डियर स्टूडेंट्स, आपका जनरेशन ऑफ रेवेन्यू कम होता है, कॉस्ट आपका है वैसा ही है. इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू अगर 100 रुपए जनरेट होता था पहले सब सीट भर के, वो इमीडिएटली केम डाउन टू 80 रुपीज. माई कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फ्लाइट इंक्लूडिंग फ्यूअल, द टर्बाइन फ्यूअल असतो तो फ्यूअल, including the payment to the pilot, including the payment to the air hostess,
everything calculated, the cost was the same as it was when the flight was occupied 100%. पण जर फ्लाइटर्स मध्ये इन्स्ट्रक्शनच ह्या दिल्या की फक्त 50% ऑक्युपन्सीनी रन करायचंय, what will the company do? If they stop their operation, it will enter into massive loss. So they were running the operation, looking into when these rules and regulation will be changed by the government, and later on it changed. Government allowed फॉर हायर ऑक्युपन्सी, म्हणजे सगळ्या लोकांना फ्लाइट्स मध्ये बसवायला आणि सगळ्या सीट्स भरवायला परवानगी दिल्या. पण तोपर्यंत कंपनीने आहे त्या ऑपरेशन्सवर स्ट्रॅटेजी, आहे त्या ऑपरेशन्सला आपल्या फ्लाइट्स रन करत होते. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज होल्डिंग स्ट्रॅटेजी. तुम्ही प्रिडिक्ट करू शकत नाही, कारण केसेस कुणी प्रिडिक्ट करू शकत नव्हतं की ते वाढणार आहे का कमी होणार आहे, कोणत्या महिन्यात वाढतील, मग त्या महिन्यात ऑफर देऊ किंवा त्या महिन्यात ऑफर द्यायचीच नाही, ऑटोमॅटिकली सीट भरतील, असं काही करता आलं नाही. त्या केसमध्ये एव्हिएशन सेक्टर adopted a strategy which is called as holding strategy. So if the point is very clear, फर्स्ट स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटेजी काय होती? होल्डिंग स्ट्रॅटेजी. आणि दोन एक्झाम्पल आपण समजून घेतले. जर एखादी ऑर्गनायझेशन एखाद्या टर्ब्युलंट इव्हेंट थ्रू गेलेली असेल, ती ऑर्गनायझेशन होल्डिंग स्ट्रॅटेजी वापरते. का? त्या पिरियड मध्ये ती ऑर्गनायझेशन रेस्ट करते, it undergoes digestion, it undergoes consolidation and does not put any efforts. The reason is it has already done one event and they wanted to observe कि इसका impact मेरे पे क्या है, वो समझने की कोशिश की. वहां पे भी होल्डिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया गया. और दूसरा स्ट्रेटेजी मैंने ये कहा कि जब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो एनवायरमेंट बहुत अनसर्टन है, वो hostile है, in that case also the company would like to opt for a holding strategy. These are the two conditions which are feasible or nesting for holding strategy which can be done. Let us move to the second type of stability strategy. The second type of stability strategy is stable growth strategy. As the word says, stable, डिवाइड कीजिए, दो वर्ड्स है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ. The stability strategy in which we are going to have both the option, where in certain cases we are going to be stable and in certain cases or certain product lines we are going to opt for the growth strategy. Such is called as a stable growth strategy. Let us try to understand what is this stable growth strategy. Let us look at the word. What does it does? It concentrates on one product line or service line instead of concentrating on all the product lines. And let me put that in also a very simple example. एक कंपनी ए आहे, त्या कंपनीच्या 3 प्रोडक्ट लाईन आहे, P1, P2 आणि P3. Instead of concentrating on all the product lines, company concentrates on only one product line. If it is concentrating only on one product line, it is one of the stable growth strategy company had adopted. Second case in which stable growth strategy can be adopted, when the growth is slow but the growth is sure. ग्रोथ है पर चलो कुछ फैक्टर्स की वजह से फिलहाल ग्रोथ नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए. In such case also I will be opting for a stable growth strategy. Third case, when I am interested to penetrate in the market, I am trying to find out new market for my company, new market for my product line, and in that product line I am trying to penetrate a market, and as per the need of the market I am trying to come up with new products or services which are to be given. That is what is called as a stable growth strategy. That is what very simple strategies. स्टेबल ग्रोथ स्ट्रॅटेजी मध्ये काय केलं, स्टेबिलिटी कशी वापरली की ग्रोथ आहे पण ती ग्रोथ एकदम स्लो आहे, आपण स्टॅबिलिटी ऑप्ट केली. ग्रोथ कशी केली, मी एका प्रोडक्ट लाईन वर कॉन्सन्ट्रेट करतोय, तिचा सेल्स वाढवायचा प्रयत्न करतोय. तिसरा, आय एम ट्राइंग टू पेनिट्रेट न्यू मार्केट्स बट at the same time I am trying to identify what are the needs and wants of that new market, and depending upon the needs and wants of that market I am trying to come up with new product is called as a stable growth strategy. I recap. पहिली स्ट्रॅटेजी आपण काय केली, पहिली स्ट्रॅटेजी आपण म्हटलं स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटेजी मध्ये पहिली सब कॅटेगरी आली होल्डिंग स्ट्रॅटेजी.
होल्डिंग स्ट्रॅटेजी कधी वापरली? ज्या वेळेस ऑर्गनायझेशन मध्ये एखादा इव्हेंट घडलाय, त्या इव्हेंटचा इम्पॅक्ट करण्यासाठी ऑर्गनायझेशन रेस्ट करते, डायजेस्ट करते किंवा कन्सॉलिडेट करते, त्याला आपण होल्डिंग स्ट्रॅटेजी म्हटलं. होल्डिंग स्ट्रॅटेजी सिच्युएशन नंबर 2 मध्ये काय झालं? एन्व्हायरमेंट अनसर्टन आहे, एन्व्हायरमेंट हॉस्टाईल आहे, पण ऑर्गनायझेशनला तिथे बिझनेस अपॉर्च्युनिटी दिसते, म्हणून ऑर्गनायझेशन त्या घडीला काहीही एफर्ट्स घेत नाही आहे, तशीच राहते. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज होल्डिंग स्ट्रॅटेजी. आणि सेकंड स्ट्रॅटेजी जर आपण जी बघितली आता, स्टेबल ग्रोथ स्ट्रॅटेजी, त्याला 3 पार्ट्स आहेत. स्टेबल का आहे? तिथं ग्रोथ आहे, पण ग्रोथ स्लो आहे. सगळ्याच प्रोडक्ट लाईनला कॉन्सन्ट्रेट करण्यापेक्षा ठराविक प्रोडक्ट लाईनला मी कॉन्सन्ट्रेट करतो आणि त्याचा बिझनेस वाढवायचा प्रयत्न करतो. पॉईंट नंबर 3, आपण असं करतो की नवीन मार्केट क्रिएट करायचा प्रयत्न करतो. आय ट्राय टू फाइंड आउट न्यू मार्केट अँड हाऊ आय एम गोइंग टू इन्क्रीज द सेल्स बाय पेनिट्रेटिंग इन टू न्यू मार्केट. बट वेन आय पेनिट्रेट इन टू न्यू मार्केट, आय ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट what are the new products and services I need to offer in that market. In that case, we adopt a strategy which is called as a stable growth strategy. One step forward, the third type of strategy, stability strategy, is called as harvesting strategy. If you remember, BCG matrix मध्ये आपण हार्वेस्टिंग स्ट्रॅटेजी केलं. हार्वेस्टिंग स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय? हार्वेस्ट, यू मिल्क द काउ, है ना? आपको पता है आगे जाके दूध कम होने वाला, आगे जाके बिजनेस नहीं मिलने वाला है, तो जो कुछ बिजनेस आपको मिल रहा है वो मैक्सिमम निकालने की कोशिश जब करते हैं हम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी. व्हेन दिस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इज एप्लीकेबल, फर्स्ट, व्हेन यू आर हॅव्हिंग अ डॉमिनंट मार्केट शेअर. डॉमिनंट म्हणजे तुम्हाला माहिती ज्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही आहात ती इंडस्ट्री डिग्रोथ करायला चालू झाली, म्हणजे त्यांचा सेल्स कमी व्हायला चाललाय ओव्हरऑल मार्केटचा. मी सुद्धा त्या मार्केटमध्ये आहे, माझं मार्केट शेअर खूप छान आहे, है ना? वेन आय एम हॅव्हिंग अ डॉमिनंट मार्केट शेअर इन द इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू बी लेस अट्रॅक्टिव्ह ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम, in that case you will try to go for harvesting strategy. Means you are going to generate cash from that business, but you are going to control your cost. You will try to increase the price so that money is generated. पैसा आपको उस बिजनेस से मिलेगा, पर आप उसी बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे. जो पैसा जनरेट हो रहा है किसी दूसरा नया बिजनेस को ग्रोथ फेज में लाने के लिए, या उसको पैसा पंप इन करके उसको एक अच्छे मोड में लाने की आप कोशिश करते हो. such types of strategies are called as harvesting strategy. Let us put that also in a very simple example. आठवतं मी तुम्हाला बीसीजी मॅट्रिक्स स्टार्ट करत असताना एअरटेल हा कॅश काऊ बिझनेस सांगितला होता. भारतीचा एअरटेल हा कॅश काऊ बिझनेस सांगितला होता. If you remember why I said it is a cash cow business, it is a cash cow business because average revenue per customer in the telecom sector, whether it is Airtel, whether it is Vodafone Idea, whether it is BSNL, average revenue per customer खूप कमी होत चाललाय. म्हणजे त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची वेळ पडली तर टेक्नॉलॉजिकल इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात, पण बाकी इन्व्हेस्टमेंट केली तर प्रॉफिट्स जास्त मिळणार नाही. मग कंपनी काय करते, आहेत त्या ह्याच्यामध्ये आपले, आता जर तुम्ही बघितलं सगळ्यांनी त्यांचे प्लॅन्स वाढवलेले आहेत. जे प्लॅन तुम्ही महिन्याला 229 रुपयाचा घेत होते तो 299 रुपयाला झाला. काय केलं कंपनीला माहिती याच्यामध्ये प्रॉफिट्स येऊ शकत नाही. येस, व्हेन विल प्रॉफिट्स कम? when new technology will come into picture. When is the new technology going to come? The launch of 5G in India will bring up different changes in telecom sector. त्यावेळेस जी कंपनी 5G आधी घेऊन येईल त्या कंपनीला कदाचित फायदा होईल. पण सगळ्याच कंपनीने 5G अडॉप्ट केला आणि प्राइस वायर चालू झाला तर त्या केसमध्ये प्रत्येक कंपनीला हार्वेस्टिंग स्ट्रॅटेजी हीच वापरावं लागेल. बिकॉज इफ द प्राइसेस गो डाऊन, cost per unit will be remain the same and it will bring down the profit margins to the company. With shrinking profits, company will not be in a position to go for investment. मग कंपनी काय करते, जो पैसा येतोय तो पैसा काढते आणि दुसऱ्या एका नवीन बिझनेस एस्टॅब्लिश करण्याचा प्रयत्न करते, किंवा एस्टॅब्लिश्ड बिझनेस मध्ये पैसा टाकला तर तो बिझनेस अजून पुढे वाढू शकतो. अशा इंटेन्शनने कंपनी स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करते, त्याला आपण हार्वेस्टिंग स्ट्रॅटेजी म्हणतो. The last strategy of discussion is called as the profit end game strategy. Look at the name itself, end game. सगळ्यात शेवटी
आपल्याला माहिती आहे तो बिझनेस बंद पडतोय, तो बिझनेस बंद जरी पडत असला तर जाता जाता सुद्धा प्रॉफिट्स कमवून जायच्या. दॅट स्ट्रॅटेजी, इनस्टॅबिलिटी स्ट्रॅटेजी इज कॉल्ड ॲज प्रॉफिट एंड गेम स्ट्रॅटेजी. when this strategy is applicable, this strategy is applicable in situation 1. जर टेक्नॉलॉजी ओल्ड आणि ऑब्सोल्यूट झाली अँड वेन ओल्ड प्रोडक्ट इज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, इन दॅट केस जोपर्यंत जुनं आहे अवेलेबल, पूर्ण 100% रिप्लेसमेंट होत नाही, त्या केसमध्ये टेक्नॉलॉजी जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं, 4G विल गेट रिप्लेस्ड बाय 5G. सो 4G जब तक चलता है प्रॉफिट कमा लो, 5G आने के बाद 4G लोग यूज नहीं करने वाले, उसका सेल्स गिरने वाला है. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर अ प्रॉफिट एंड गेम स्ट्रॅटेजी. सेकंड, इट इज ऍप्लिकेबल इन द ऑटोमोबाईल सेक्टर. ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये एखादं मॉडेल बंद झालं, इमिजिएटली त्याच्या सेल्स झिरो होत नाही. त्या मॉडेल रिलेटेड कंपोनंट्सची रिक्वायरमेंट कस्टमरला असते, कारण की तो मॉडेल अजूनही मार्केटमध्ये एक्झिस्ट करतो. म्हणजेच काय, त्या मॉडेलच्या रिलेटेड जे स्पेअर पार्ट्स असतील ते वर्षानुवर्ष चालतात. त्या स्पेअर पार्ट्स मधून कंपनी पैसे जनरेट करते, जरी कंपनीने तो मॉडेल बंद केलेला आहे. लेट अस पुट दॅट इनटू अगेन एन एक्झाम्पल. Bajaj closed down the operation of scooters and came into motor vehicle segment. सो ज्यावेळेस स्कूटर्स त्यांनी बंद केल्या, बजाजच्या ऑलरेडी खूप स्कूटर्स अवेलेबल होत्या, ह्याचा अर्थ असा कधीच झाला नाही की बजाजने स्कूटर बंद केली म्हणजे बजाजचे स्कूटर मार्केटमधून पूर्णपणे गेले. जे लोक स्कूटर्स तेव्हाही वापरत होते, जेव्हा मॉडेल बंद झालं त्यांना त्यांच्या स्पेअर पार्ट्स लागत होते, कंपनी स्पेअर पार्ट्स अवेलेबल करून देत होती. पण कंपनीने त्यावेळेस काय केलं, ते स्पेअर पार्ट्स त्या बंद केलेल्या प्रोडक्टला जे अवेलेबल असतील त्याचे प्राइसेस वाढून द्यायचा प्रयत्न करतात, म्हणजे त्याच्यामधून जास्त प्रॉफिट जनरेट होतो. त्यांना माहिती आहे कस्टमरला पर्याय नाही, ते पर्टिक्युलर स्पेअर पार्ट्स त्यांना गरजेचं आहे, कंपनी कॉस्ट वाढून देते आणि ते स्पेअर पार्ट्स घेतात. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड, विच इज कॉल्ड ॲज प्रॉफिट एंड गेम स्ट्रॅटेजी. अँड द third situation, third point is when I said that we are going to have replacement of old technology, which I have already said. If the old technology is going to get replaced, आता बघा डिजिटल वॉचेस म्हणजे जो ट्रॅडिशनल कन्व्हेल वॉचेस वेर रिप्लेस्ड बाय डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच इज नाउ रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट वॉच, है ना. सेम विथ मोबाईल, the mobile you had previously and the mobile you are using today, laptop which you had previously and the laptop you are using today. What I'm trying to tell into is profit end game strategy is a strategy which is going to get adopted when you stop manufacturing of a particular product, particular service, particular model, but it still exists in the market for certain period. Still the time it exists, whatever are the spare parts, whatever are the sales which are going to get generated, will create a profit for the company. And as it is the end game of that particular product or services, company targets to gain profit from that. Hence, those strategy is called as profit end game strategy. So let us try to recap what we have done. Dear students, we tried to understand what is called as stability strategy. आणि मी तुम्हाला सांगितलं स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटेजी म्हणजे एकदम सोप्या भाषेत स्टॅटस क्यू मेंटेन करणे, म्हणजे काहीही एफर्ट्स एक्झिस्टिंग स्ट्रॅटेजी मध्ये टाकायच्या नाही. का नाही टाकायच्या? बिकॉज the industry or environment is in turmoil or is volatile or uncertain condition predicts or organization itself have finished into a period of rapid growth. मग जर स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटेजी वापरायची ठरली तर वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स मध्ये कंपनी ह्या 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटेजी वापरू शकते. व्हॉट आर दोज डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटेजी? द फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज होल्डिंग स्ट्रॅटेजी, सेकंड विच इज कॉल्ड एज स्टेबल ग्रोथ स्ट्रॅटेजी, third which is called as harvesting strategy, and the fourth strategy is called as profit end game strategy. I conclude this session by making you understand that today we tried to understand what is called as corporate level strategy or what is called as grand strategies. आणि कॉर्पोरेट आणि ग्रँड स्ट्रॅटेजीज ब्रॉड क्लासिफिकेशन 3 टाइपचे आहेत. कोणकोणते? स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटेजी जी आज आपण कव्हर केली, ग्रोथ स्ट्रॅटेजी आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये बघतोय, आणि शनिवारी वी विल ट्राय टू कव्हर व्हॉट इज कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट स्ट्रॅटेजीज. ह्या ब्रॉड स्ट्रॅटेजीज आहेत कॉर्पोरेट लेवलच्या. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रॅटेजी किंवा ग्रँड स्ट्रॅटेजी का म्हटलं गेलं? ह्या सगळ्या स्ट्रॅटेजीज ऑर्गनायझेशनला डायरेक्शन्स देतात त्यांच्या ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह करण्यासाठी.
ह्या स्ट्रॅटेजीज प्लॅन कोण करतं? These strategies are planned at top level by the top level people, which will give direction to the organization so that organization's objective are achieved. We concluded stability strategy, which are further classified into four: holding strategy, stable growth strategy, harvesting strategy, profit endgame strategy is what we have covered in this lecture.